indispensable. In this lesson, we will learn the meaning and how to use the word indispensable. But guys, haven't yet subscribed to English Chinwag? Then subscribe and press the bell icon so that you can always become better in English with our interesting lessons. And now the meaning of the word indispensable is if someone or something is so good, is so important, is so crucial that you can't manage without it or without them. यानी कोई व्यक्ति या कोई चीज़ इतना ज़रूरी हो, इतना क्रूशियल हो, इतना बहुमूल्य हो जिसके बिना आपका काम ना चल सके. दैट इज़ टू से लाइक बहुमूल्य, और वैसा चीज़ जिसके बिना आपका काम ना चल सके, दैट इज़ indispensable. So now guys, let's see some example to make it even more clear. And now, the example would be his long experience makes him indispensable part of the organization. His long experience makes him indispensable part of the organization. That means कि उनके लंबे एक्सपीरियंस की वजह से, उनके लंबे तजुर्बे की वजह से वो अपने कंपनी के एक काफ़ी इंडिस्पेंसिबल मेंबर हैं, काफ़ी इंडिस्पेंसिबल व्यक्ति हैं, काफ़ी बहुमूल्य व्यक्ति हैं. दैट इज़ टू से indispensable. Okay, so now some more example. I can say that this channel is indispensable for English learners. This channel is indispensable for English learners. That means ये channel English learners के लिए काफ़ी ज़रूरी है. That is to say like बहुमूल्य है, यानी इस channel के बिना काम ना चल सके. Okay, इस channel के बिना काम ना चल सके. That is to say like indispensable. Okay, yeah. Now some more example. Internet and smartphone has become indispensable part of our life. Internet and smartphone has become indispensable part of our life. That means इंटरनेट और स्मार्टफोन आज के ज़माने में हमारे लिए ये indispensable part of life बन चुके हैं, यानी कि काफ़ी बहुमूल्य बन चुके हैं, यानी जिसके बिना काम ना चल सके. There you have it. तो अब आप जान चुके हैं कि क्या है indispensable का मतलब और कैसे करेंगे हम इसे किसी सेंटेंस में यूज़. अगर गाइस अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो गाइस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी आप सवाल पूछ सकते हैं. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दोज. एंड मीन टाइम गाइस, फाउंड दिस वीडियो टू बी हेल्पफुल, विच आई एम श्योर यू मस्ट हैव, then give this video a big thumbs up, and haven't shared this video, guys, please share this video to your friends, family, so that they can also learn the meaning of indispensable and how to use them in sentences. And now, meantime guys, haven't yet subscribed, then subscribe and press the bell icon so that you can always become better in English with our interesting lessons. And until we meet next time, take care. Cheers guys.